आज के दिन ढूंढे कि कौन हमारी आंगनवाड़ी में जो काम किया है और रिटायर हुआ है उन तक जाए और उनको ढूंढ के बोले कि ये फॉर्म भरो और पहले सीडीपीओ को डालो. President, All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers, Comrade A.R. Sindhu, General Secretary, Comrade Veena Gupta, and of course our Arun Mehta, who is instrumental in getting this judgment. I'm sorry, I got an apology, I can't speak in Hindi, so please bear with me. I speak in English. Of course, the details of the case, the every information that are required is always very precious to you, and all these matters are already given by Comrade Arun Mehta in your own language, so I don't think my words in English will create any problem. कॉमरेड इंग्लिश में बोलेंगे तो एक तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुने इतना, क्योंकि सब ऑल इंडिया लीडर्स हैं हमारे, तो सब समझते हैं. दूसरा, जो सारे डिटेल्स काफ़ी अरुण जी ने रख दिए हैं, कॉमरेड अरुण मेहता ने, तो दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में. Comrades, let me congratulate the Anganwadi Workers Federation at the outset, because this historic judgment definitely is historic on various reasons, not one. You know that Supreme Court nowadays regularly delivering judgment, especially in industrial matters, labor matters concerning workers, in favor of employers. Day by day, rights of workers are not honored by various courts, including Supreme Court, especially in this era of globalization, immediate globalization and liberalization. In such a situation, to get this judgment is definitely historic. Two things, of course, very important. One is, it is not only meant for Anganwadi workers and helpers. It is applicable to all such employees who are not so far reckoned or acknowledged as employees by the government, either by the central government or the concerned state governments. Under similar circumstances, our ASHA workers are working. Definitely, the benefit of the judgment will be available to ASHA workers. Definitely, for that we have to fight legally also in courts. The point is, the importance of the judgment is not that 5 members who were denied that gratuity by the division bench of the High Court, that is Gujarat High Court, is now restored by the Supreme Court. No, that is not. Only because this course was taken up by Comrade Arun Mehta as President of Gujarat Anganwadi Workers Organization, we could get this judgment. That is importance. As the union has taken up the matter, our emphasis, our object was not to get gratuity for 5 members only. And our effort was not only to get gratuity to Anganwadi workers as well. Our objective was to get a liberal interpretation for the concept of establishment and employees. That is importance. The first time the Supreme Court, despite the fact that 2 earlier judgments declined, rejected similar claim by Anganwadi workers, is now reversed by the same Supreme Court. That is important. First time in the history of Supreme Court went far beyond the letter of the statute.
with respect to establishment and employees, and of course wages. The concept of establishment projected by government, state government as well as central government, and of course accepted by the High Court Division Bench and many other High Courts, was if you want to get gratuity, your employer, there should be an employer, and that institution must be an establishment. Establishment must be indulging in any business, trade or commercial activity. Otherwise, you are not eligible for gratuity. That was the accepted view hitherto. हमने बताया कि जो मुख्य उनका जो एम्फेसिस था, ये जो निर्णय है ये सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर के लिए ही नहीं बल्कि और जो दूसरे इसी तरह के एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, जैसे आशा वर्कर्स हैं। और एक ऐसे दौर में जबकि सुप्रीम कोर्ट रोजाना अधिकांश निर्णय ऐसे दे रहा है जो मालिकों के पक्ष में है और लेबर के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, उसमें ऐसे निर्णय आंगनवाड़ी के पक्ष में हो पाना, एम्प्लॉय के पक्ष में हो पाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं दो बातें हमने महत्वपूर्ण तरीके से ली। पहला तो ये कि ये जो है सभी उस तरह के स्कीम वर्कर्स पे लागू होगा जो आंगनवाड़ी की तरह का स्टेटस है। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट के सामने सिर्फ यमनारा ये नहीं था कि ग्रेचुइटी मिले खाली और के लिए या पुराना निर्णय पलटने के लिए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करना जो था वो मुख्य था, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये हमारा आंगनवाड़ी आता है कि नहीं आता। तो मुख्य जो फोकस था हमारा वो था कि इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जो की जाए। दूसरा कि हमारा फुल टाइम काम है तो हमें एम्प्लॉय का दर्जा हो, तो ये मुख्य फोकस हमारा दो चीज़ों पर था। Now, three important aspects are emanating from the judgment. One is, first time in the history of the Supreme Court as well as for the last, 72, almost 50 years, the Anganwadi workers' service to the nation, service to the mothers and children, this aspect is reckoned, acknowledged, respectfully acknowledged by the Honorable Supreme Court. That's very important. You are now given a dignified position in the society. Your work, your service to the nation at the grassroots level is acknowledged with respect, and that dignified position is given to Anganwadi workers. Secondly, the Supreme Court not only ordered that you are eligible for gratuity, but also requested or made a earnest request to the government to enhance your salary or wages, whatever. Gratuity is different. More than that, now the central government is requested by the court, I may say ordered by the court, that as this much service is done by Anganwadi workers, practically they are undertaking full-time employment. There is no other opportunity to work otherwise in any other establishment. And after the promulgation of Food Safety Act, your duty is multifold now, enhanced multifold. So definitely your wages, Anganwadi workers and helpers' wages should be enhanced. And there can be insurance for you, there can be other benefits. All these things should be now considered by the Government of India as ordered by the the Supreme Court. That is the second important aspect. Third thing is that hitherto the wages defined under the Gratuity Act was considered by the courts if it is only wages in strict sense as prescribed in the Act. Now the court said that the honorarium given to you, the small amount, it is not a simple gift, it is wages. You are doing work, whether it is industrial work or otherwise, you are doing work,
the honorarium given to Anganwadi workers and helpers are pakka wages. So you can't deny the fact that you are employees under the government, though not government employees. So on all these counts, now Supreme Court emphatically said that you are eligible for gratuity because the establishment under which you are working is undertaking an organized activity. In the Bangalore case, on the Supreme Court way back in 1978 said that to become an industry, the institution need not undertake commercial activity, need not undertake any activity of business with a profit motive. If the activity is an organized activity, just like your activity that work under the Anganwadi work scheme, definitely that is industry. That was the finding of the Supreme Court in 1978. But after that, in many of the decisions, the Supreme Court went back and tried to revive the old concept. Now, fortunately, the Supreme Court accepted that position of Bangalore case that to become industry, the institution need not undertake business or commercial activity. If the engagement is an organized activity, for organized activity, definitely it should become industry. Same concept is now accepted in the Supreme Court to give meaning to the establishment. That is the important aspect. हाँ, तीन मुख्य जो पहलू हैं उन पे आपने रोशनी डालते हुए कहा कि पहली चीज तो ये है कि सरकार ने खुद ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो आपको आपका जो काम है उसे एक बड़ी गरिमा प्रदान की है और ये कहा है कि ये कोई ऐसा ही पार्ट टाइम काम नहीं, फुल टाइम काम है और आप देश के बच्चों का, देश के निर्माण का काम करते हैं। तो ये संविधान का भी प्रावधान है और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है और शिक्षा अधिकार कानून आया है उसके प्रोविजंस के अनुसार आप लोग काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही डिग्निफाइड काम है और इस काम के अनुसार इनको विचार करना चाहिए सरकारों को कि आपको फुल वेजेस दें। जो वेजेस डिफाइन की गई है ग्रेच्युटी एक्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, मानदेय नहीं, बल्कि ये हमारे वेज में आना चाहिए, हमारे वेतन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा फुल टाइम काम है, ये भी कहा जाए जी, ये भी उन्होंने कहा है। तीसरा चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन, सरकार का शायद तर्क था और कि भाई ये जो है आंगनवाड़ी केंद्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुनाफे के लिए काम करते हैं, कोई प्रॉफिट हो, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इसको इसमें ये जो है ये इस तरह से इन पे ये लागू नहीं किया जा सकता। तो एक केस था बेंगलोर का और उसमें इंस्टीट्यूशन की एक डेफिनेशन ये दी गई थी कि अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है तब भी वो ग्रेच्युटी के हकदार हैं। और यहाँ भी आर्गूमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने माना कि कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा जो पहले वाली शुरू में बात कही थी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारा है वो इंस्टीट्यूशन है और हम लोग ये राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो ये तीन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। Dear friends, one of the grounds for the Supreme Court to declare that Anganwadi workers and helpers are eligible for gratuity is that there is clear guidelines and rules for selection of Anganwadi workers and helpers, at least in Gujarat. The case projected by the authority, state government as well as central government was that this is only a voluntary activity undertaken by workers and helpers. They are doing service, of course, but that is voluntary service, and it is not, the selection is not based on any guidelines or rules. We are not appointing or engaging workers or helpers. The concerned body is making that appointment or engagement. That was the case projected by the Union of India as well as state government, Gujarat. Fortunately, we could produce the rules framed by Gujarat government.
In Gujarat state, there is clear rules for appointment, engagement, even for leave and disciplinary action. If you are not an employee, how can the employer can take disciplinary action against you? So we highlighted that. That is accepted the court. Court said that there is clear rules for selection, for appointment or engagement. There is clear rules and regulation for granting leave, and there is clear rule for disciplinary action against erring employee, whether worker or helper. That shows government has got control over the employees, control over workers and helpers. So that is one of the grounds taken by the Supreme Court to declare that you are employees and hence you are eligible for gratuity. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अरुण भाई ने अपने बात में बताया भी था कि गुजरात सरकार के आंगनवाड़ी वर्कर के अपॉइंटमेंट के या टर्मिनेशन या डिसिप्लिनरी एक्शन के भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी बहुत ही स्पष्ट वहाँ पे रूल्स है, नियमावली बनी हुई है। हाँ, तो उसके बाद बनाए गए आपके यहाँ गुजरात आंगनवाड़ी की डिमांड के बाद वहाँ पे ये सारे रूल्स बनाए गए थे, और ये रूल्स भी जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए कि ये एक बुनियाद बनी, इस निर्णय के लिए ये भी एक बुनियाद बनी। One of the important function or activity undertaken by your Anganwadi is pre-primary education, preschool education to children of age 3 and 6, between 3 and 6. We know that in common parlance, in villages, we call Anganwadi a school. Children are sent to Anganwadi for learning something before schooling, primary schooling. So this is also accepted by the Supreme Court. So even if your establishment is not an establishment covered under the Gratuity Act, you are eligible for gratuity because the Government of India had already issued a circular notification under the Gratuity Act. I think a section is not required because you are not concerned with section and all that. Under the Gratuity Act, that whether your establishment is establishment or otherwise under the Act, all institutions, all education institutions are notified as establishment covered under the Act. That means whether you are doing any commercial activity, business activity, trade or not, as you are engaging in pre-primary, preschool, non-formal education in Anganwadis, definitely you are eligible for gratuity, because central government had already in 1997 issued a circular that all education institutions are establishment under the Act. So एक और जो बुनियाद रही इस फैसले की वो थी कि आंगनवाड़ी जो है वो प्री प्राइमरी यानी 3 से 6 साल की जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पार्ट है वो करती हैं। तो ये इसमें ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले एक निर्णय में शायद बेंगलोर का कोई आपने दिया था, उसमें ये कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन भले ही वो कॉमर्शियल सर्विसेज ना दे रहा हो यानी मुनाफे वाली, तो कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन वो अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के दायरे में आएगा। जैसे स्कूल्स है इंस्टीट्यूशन के दायरे में वो आएंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट में डिफाइन होंगे। ये भी एक बुनियाद बनी हमारे इस फैसले की, एक बहुत महत्वपूर्ण। My dear friends, all these things we could generate and ultimately we could get this judgment. That's only because the matter is taken up by the Anganwadi Workers Federation. I'll tell you why. It is not a simple thing. Originally, there were 5 cases filed by 5 individual workers who were denied gratuity by the division bench. As Comrade Arun Mehta already told you that primarily the primary authority granted gratuity, that was confirmed by the appellate authority and confirmed by a single judge of Gujarat High Court. That case judgment was reversed by another division bench, and incidentally I had to say
that judge who wrote the judgment saying that you are not eligible for gratuity is now a judge in the Supreme Court. Despite the fact that another bench in the Supreme Court reversed that judgment. That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात हाई कोर्ट में, क्योंकि जैसा कॉमरेड अरुण मेहता ने आपको बताया कि पहले ये जिले से संघर्ष करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी फेवर में दिया और फिर सरकार ने डबल बेंच की रिक्वेस्ट की, उन्होंने पलट दिया वो निर्णय। और जिस जज ने निर्णय पलटा था वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज है। उसके होने के बावजूद भी हम लोगों ने ये जीत हासिल की, ये एक बहुत बड़ी चीज है। Before your union took the matter before the Supreme Court, I told you there were 5 cases filed by individual workers or helpers. They projected a simple case that they are eligible for gratuity. The reversal of the single judge judgment is wrong. If that is the only case projected, you won't get the judgment, because if the conventional interpretation is given to the concept of establishment under the Gratuity Act, you won't get it. The concept, the conventional interpretation is given, definitely you will be denied of the gratuity, because establishment hitherto was interpreted that there should be some sort of business, trade or activity or commercial activity. On primary reading of the Act, definitely we know that you are not eligible for gratuity. So when the Comrade Arun Mehta took the matter up, we projected some other important aspect. That is, one of the important things is that we argued that whether you are establishment covered under the Act or not, whether you are conducting or engaging in business, trade or commercial activity, we are unconcerned, because in 1997, Government of India had issued a circular notification saying that all education institutions are establishment under the Act, under the Gratuity Act. So if you are working under an education institution, you are eligible for gratuity. That was the meaning of the notification issued by the Central Government, Union of India, in 1997. Only when we produced that circular, only because we could produce that circular, court was prepared to hear the matter. Otherwise, court was also opinion that you are not eligible for gratuity. Court was about to reject your claim. When we produced this notification, court was prepared to hear the matter in detail. अगर हमने इसकी बिल्कुल एक तकनीकी तरीके से या टेक्निकली बस कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन इसका दिया होता है, जैसे डेफिनेशन है ये ग्रेचुटी है, इनको मिल सकती है, तो ये केस हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 5 केस इससे पहले भी आए थे जो वहाँ पे चल रहे थे। हमने जो है रोशनी डाली सबसे ज़्यादा इस बात पे कि 1997 में केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, और सर्कुलर जारी करके कहा था कि जो जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यानी शिक्षा संस्थान हैं, वो सारे के सारे शिक्षा संस्थान इंस्टीट्यूशन के दायरे में आते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ प्री प्राइमरी भी होती है और ये सर्कुलर इन्होंने वहाँ कोर्ट में पेश किया, तो हमारे यहाँ प्री प्राइमरी की इम्पोर्टेंस भी है और ये काम भी ये करते हैं और अन्य संवैधानिक दायित्वों के साथ इसका निर्वाह करते हैं। तो इसको लेकर के जब ये सर्कुलर इन्होंने जो 1997 का था वो पेश किया, तो कोर्ट हमारा केस सुनने के लिए तैयार हुआ। Likewise, comrades, we could produce, as I mentioned earlier, the circular circular guidelines and rules prepared by Gujarat government for employment, engagement, leave and disciplinary action with respect to Anganwadi workers.
all these two important things we could make it only because union has taken up the matter. If the union was not there, such materials would not have come, because we lawyers could not search out whether Gujarat government issued ruler or not. Only union could search it out and produce. Only because Comrade Arun Mehta and the union took that matter seriously, they could give that documents and we could produce that two documents before the court. Otherwise, court would not have heard the matter in detail. इस केस में क्योंकि ये केस एक यूनियन के द्वारा आया था, हमारी गुजरात की यूनियन के द्वारा रखा गया था, तो एक हर डिटेल और हर डॉक्यूमेंट और विभाग से जुड़े, आंगनवाड़ी से जुड़े ये जो रूल्स थे और बहुत सारी चीजें, जानकारी और इन्फॉर्मेशन कॉमरेड अरुण मेहता ने और यूनियन की मदद से वहां पर तक पहुंचाई। क्योंकि अगर ये सिर्फ वकील के रूप में लड़ते तो बिना उनकी मदद के नहीं हो सकता था। और मैं इसमें जोड़ूंगी कि अगर कॉमरेड का भी एक व्यापक पर्सपेक्टिव ना होता तो भी नहीं हो सकता था जो कॉन्स्टिट्यूशनल और देश के बारे में। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर के, यानी यूनियन की मदद और जो एक वकील की एक्सपर्टीज है, दोनों ने मिलकर के इस केस का जो ये फेवर में निर्णय आया है। Now, comrades, only one aspect, all other things already mentioned by Comrade Arun Mehta. Now, what is your duty? You have to make claim petitions, I already said. More than that, definitely you have to do that. Now, the particular judgments was with respect to Gujarat Anganwadis. So, similar situations are there in various other states. You have to find out. You have to find out what is the position, what is the rules, what is the service rules, guidelines available various other states. What is the honorarium or wages given by the state government for Anganwadi workers in other states? Not only that, what exactly the concept of establishment in the Shops and Establishment Act in other states. So all these things the union should take it up and should take the matter from the initial stage itself and claim gratuity for Anganwadi workers in other states as well, citing this judgment and with the supporting material showing that we are also working under similar circumstances and conditions. So in that event, definitely the benefit of this judgment will be available to all Anganwadi workers in all India basis in all states. So please take that matter. So that will be a great service to Anganwadi workers, not only Anganwadi workers, great service to workers' movement in India. So before leaving, without closing my words, one more thing. We are lawyers definitely, whether we are left lawyers, union lawyers and all that. So our contribution is very limited. If you people, comrades and union are not vigilant about your rights, not vigilant about denial of rights by the courts and institutions, authorities, government, no lawyer can protect your interests. So primary thing is that you individually and as union should be alert and vigilant about your right, and if you are so alert like you did in this case, definitely you can move forward. That will be a model movement for other workers as well. With these words, I thank you for giving me this opportunity to communicate my thoughts with you. Thank you. Thank you. अभी आपका ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य है कि आप अपने राज्य के जो रूल्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि ये भी हर राज्य के रूल्स में अलग अलग है,
आपका क्या ऑनरेरियम है, आपका स्टेट से समय समय पे क्या ऑर्डर्स हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करें और उनके बारे में अध्ययन करें। हर राज्य की जो यूनियन है उसे इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाथ में लेके हमें अपने जो अधिकारी हैं उनके पास जा करके अपने पत्र जो हैं वो सौंपने चाहिए। और कॉमरेड ने बहुत विनम्रता से अपने लिए कहा कि हमारा जो वकील का योगदान है वो बहुत सीमित है, क्योंकि अगर यूनियन अपने अधिकारों के लिए, अपने संस्थान के व्यवहार, अपना रूल्स के लिए अगर विजिलेंट नहीं है, जागरूक नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे को कैसे आंदोलन कर सकते हैं। तो आप अपने अपने राज्यों में जानकारी करिए, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे, आप एक तरह से कहना चाहिए ना वॉच डॉग की तरह, विजिलेंट मतलब जो हर समय एक अपने चौकीदारी करता रहे अपने अधिकारों की, तभी यही नहीं और आगे आप जो अपने अपने राज्यों में अभी दिक्कतें आएंगी तो उन दिक्कतों को दूर करते हुए ये पाने में सफल होंगे। और यही नहीं आंगनवाड़ी वर्कर, बल्कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो आंदोलन है वो देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक मॉडल आंदोलन भी बन सकता है। ये कागज में रह जाएगा। संविधान में भी तो बहुत कुछ लिखा है, कानून में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो कागज में है। जब तक हम अपना लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी यूनियन का बताया है कि हम आज के दिन ढूंढे कि कौन हमारी आंगनवाड़ी में जो काम किया है और रिटायर हुआ है उन तक जाए और उनको ढूंढ के बोले कि ये फॉर्म भरो और पहले सीडीपीओ को डालो, और सीडीपीओ को डालने के बाद में फिर हम जो इसका अथॉरिटी है ग्रेजुएटी का वहां पे भी डाले। और वो उसके लिए यूनियन आपका मदद करेंगे। चाहे हर जिले में लोगों का मीटिंग बुला ले और मीटिंग में कर ले, उनका संगठन भी बना लो। आंगनवाड़ी पेंशनर्स का हमें बनाना है, ये हम लोगों को निर्णय लेना, उनको संगठन से जोड़ के रखिए। और कोई वर्कर का अगर डेथ भी हुआ है, जो मीरा दत्ता जैसा, उनका बच्चों को ढूंढिए कि तुम्हारी माँ ने इतना काम किया है, या उनका कोई रिश्तेदार है, उनको ढूंढिए और बताइए कि ये पैसा सरकार से इनका काम का बनता है, कि आपको चाहिए ना चाहिए। बच्चे कोई कलेक्टर भी हो बोले ये हक है, अगर आपको पास में रखना ना रखना ये ले लो, और अगर आपको चाहिए तो यूनियन को ही दे दो, आपको जरूरत नहीं भी हो तो, लेकिन ये लड़के लेना है, इसका काम हम लोगों को करना है। ये काम हम करेंगे, ये आप लोगों को एक एक को करना है, संपर्क बनाना है, उसमें जोड़ना है, फिर उनको क्लेम डालना है और उसको करना है। उसको बढ़ाने की लड़ाई संगठन से करेंगे ही। जो 3,000 रुपए वाले का 30,000 रुपया को 3 लाख करवाने की लड़ाई हम साथ साथ में करते भी रहेंगे, तो वो भी हम लोगों को साथ में करके रहना है। ये हमारी